हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप हैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद यूटी पर और अब तक हमने 2 लॉन्ग वीडियोस बनाए हैं अलॉन्ग विद मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस दैट आई कीप मेकिंग। नाउ उन 2 लॉन्ग वीडियोस में हमने पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू सम बिट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझा है और उनके इंट्रोगेटिव केस को भी समझा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। Now, with that, we will now start talking about parts of speech. And parts of speech, there are 8 parts of speech in English, and all the words जो कि English में हैं वो इन ही parts of speech का एक हिस्सा है, या तो वो noun है या pronoun है, and these are all your parts of speech. Let me name them for you. Noun is a parts of speech, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now these are your 8 parts of speech. Make a series of videos for all these parts of speech, and the first thing that we will discuss is a noun. Now जितना आसान है उतना ही आपको समझ नाउन की डेफिनेशंस आसान है, बट इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउन एक सेंटेंस में मल्टीपल रोल्स प्ले करके सब्जेक्ट हो सकती है, कभी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इन सबको डिस्कस इन सबको समझने के लिए हमको नाउन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज और ये शायद आपको अच्छे से याद भी होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। लाइक आई सेड, नाउन के मल्टीपल यूजेस होते हैं and there are types of nouns as well. We will discuss the types of nouns. The first noun is, I will put nouns here. The first one that we will discuss is, now proper noun is the names of specific people, places or things. For example, let's take an example. You say Red Fort. That's a proper noun. These are very specific names or the name of a person, and they are always capitalized. So let's say in a sentence, if I have to mention a proper noun somewhere, they will always be capitalized. For example, Ramesh, the first letter of the word will always be capitalized. Taj Mahal, Red Fort. A thing to remember is that they are always capitalized. Number 2, common noun. As the name suggests, common nouns are nouns that are names of common things. So it can be books, apples, bananas, all the things that you see commonly, girls, boys, all of those are common nouns. Girls, apples, etc. They are not capitalized. Common nouns are not capitalized unless they come in the beginning of the sentence. Then you have to capitalize them. Otherwise, you do not have to capitalize common nouns if they come somewhere in the middle of the sentence, or let's say towards the end. Then you will not capitalize them. I will now put the third one would be, now concrete nouns are nouns that can be perceived by your 5 senses. You know, the 5 senses that we talk about: touch, see, hear, shirt. These are all concrete nouns. So concrete nouns are nouns that can be perceived by our 5 senses that are there, right? Now I will remove this and put, abstract nouns are nouns that cannot be perceived by our 5 senses. So abstract nouns are abstract in nature. For example, honesty. Now you can't feel it, you can't see it, you can't touch it. So honesty is an abstract noun. Love, an abstract noun. Honesty, curiosity, love, hate. All these are your abstract nouns. Let's move on to the next one. Collective nouns are the nouns जो कि एक ग्रुप को डिनोट करती हैं, एक क्लास को डिनोट करती हैं, ओवरऑल उनको. Let's say a group is a collective noun. A group can have multiple people, but if you just say group, वो multiple people आपका ग्रुप बन जाएगा. क्लास, सिर्फ एक वर्ड से आप पूरा कलेक्टिवली उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो इस वजह से वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाती हैं. ग्रुप, क्लास, आर्मी, all of these are your collective nouns. Now the next one is, a compound noun is made up of
two or more nouns together. That is where you can put daughter-in-law, father-in-law, so on and so forth. Because compound means more than one. So these are the nouns that we have as nouns. Now, one quick thing that comes also in mind. So I'm going to just name the nouns here. Proper noun, common noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, and compound. Now, nouns also countable और uncountable. And as the name suggests, अगर आप उनको काउंट कर सकते हो तो वो काउंटेबल हो जाएंगी, अगर अनकाउंटेबल हैं तो आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे. काउंटेबल एनीथिंग दैट यू कैन पुट अ नंबर टू, अगर आप नंबर उसके अगेंस्ट पुट कर सकते हो, जैसे वन गर्ल, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, फोर गर्ल्स. एग्जाम्पल, वन मैन, टू मैन, थ्री मैन, फोर मैन. All these are countable. One bed, two bed, three beds, so on and so forth. Uncountable is an uncountable noun. For example, milk. Can you say one milk, two milk? No, you cannot. You can say a glass of milk, two glasses of milk. But आप milk को वैसे count नहीं कर सकते, so that it becomes uncountable. Sugar, yeah, remains uncountable. News, okay. You don't say one news, two news, three news. Uncountable. An interesting thing, and a lot of people think that stars are uncountable. हम लोग हमेशा कहते हैं कि stars जो है अनगिनत. The truth is that stars are countable. Can you say one star, two stars, three stars, four stars, five stars, six stars, so on and so forth? आप कह सकते हो. So stars are countable. At least in theory, they come in countable nouns. So that's something that you should always remember. Nouns are, these are the types of nouns: proper, common, concrete, abstract, collective, and compound. And there are countable nouns and uncountable nouns. And like I said, अगर आप किसी भी noun पे if you can put a number to it, then वो countable रहेंगी. अगर आप उन पे number then वो uncountable. So ये हमने आज noun को अच्छे से समझने. दोस्तों, आपके एसोसिएशन के थ्रू मेरे को और कंटेंट क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए ला सकूं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.